Hello everyone, this is Mahwash Ajaz and I'm joined by somebody who I've been trying to talk to for a very long time and this has been a long time coming. I'm so glad that she's finally here in my house. This is actually my house. So Uzma Beg is here. Yay! Assalamu alaikum. Finally, how are you, Uzma? I'm good, my darling. I'm good, and it's good to be here. I've Yeah. just had a bit of a nightmare getting here, but वो हम बाद में We'll talk about that, yeah. This is like a मेरा blooper reel. हम नहीं मैं no blooper reel. Actually, I'm a complete Mr. Bean of driving. A Mr. Bean of अगर driving. आपने कोई मिस्टर बीन को ड्राइव करते देखा ना हर चीज मेरी गलत हो रही होती है. No, but guys, this is like an exaggeration. She was like almost perfectly on time. There was no problems. She just panicked a lot more than she thinks she did. She's being nice. No. She panicked and she was absolutely fine, reached fine. Like, where are you? I'm like, I'm right here. So it was pretty cool of her to give us her time. And then I've been meaning to talk to her since I saw her work in Angan. I know she's done a lot of work before that as well. But Angan was something that really caught my attention in so many ways because Uzma, it was such a different role compared to what we usually see on TV, and also for somebody like with this avatar, this is who you are, Yeah. and then doing that role. Tell us about that role. Like, what was that like, and then we'll move on to like the other work that So you've done. Angan was diametrically opposite to who I am. Yeah. And उसका एक one liner था literally. If you guys have watched Sholay, so it was Jaya Bhadri who could talk also. बस यही फर्क था. वो बोल नहीं सकती थी और ये औरत बोलती थी. तो या सो इट वाज एंड इट्स सो नॉट मी. मैं तो इतना बोलती हूँ कि कोई हद नहीं. और कैन यू इमेजिन मी वैसे सुबह बुकबम मैंने पूरा ड्रामा जो है ना वो बिल्कुल करके किया. सो या दैट वाज वेरी चैलेंजिंग. इट वाज एंड इट वाज अ लॉन्ग हॉल. एंड उसका मुझे याद है उसका शूट शुरू हुआ था अक्टूबर में शुरू हुआ था उसका शूट in 2017 and it went till March 2018 for me. So I had to spend a lot of time in Gujranwala and had to spend a lot of time in Wazirabad. So it was physically challenging and वो जिस जगह पे हम शूट करे थे वजीराबाद में वहाँ अक्सर बारिश शुरू हो जाती थी. वो इट वाज एन ओल्ड अबैंडन्ड काइंड ऑफ it had that whole feel. Yeah. उसको हमने शूशान किया हुआ था बट इट वाज प्रीटी लाइक इट वाज प्रीटी बैड. सो उसमें ये होता था कि उसमें वो होते थे बारिश शुरू हो जाती थी और कभी कोई ईंट फ्लाइंग आ रही है कभी कोई. इट वाज अ बिट फ्रीकी. सो हम शुक्र है हम पे तो कभी कुछ नहीं हुआ बट लगता था कि अभी कुछ गिरने वाला है या कुछ ऐसा कुछ होने वाला है. बट शुक्र अल्लाह का कि हम सब बचत होगी खैर खैरियत से निकल आए. उन्होंने काफ़ी सेफली शूट किया वहाँ पे. बट इट वॉज क्वाइट चैलेंजिंग. द रोल वॉज चैलेंजिंग, द शूट वॉज चैलेंजिंग, बट इट वॉज सच एन एक्सपीरियंस ना. सो आई एक्चुअली रियली enjoyed that. Uzma, what's the kind of work that you after that you've done so much other kind of work which is not the same as that. You've done high pitched comedy, you've done characters which are again diametrically opposite to not just who you are but then obviously to that character which was like let's say a classic character like Angan, a demure woman which is so common in our TV shows. Do you feel like such a leap is necessary for actors like yourself? And I remember you and I were talking about it and you said that I don't really take on characters until they are like really I understand them from A to Z. Yeah. So how does that process work, and when you take on a character like that, what are the things that you keep in mind? So the thing is, it's pretty easy to play me, right? Because I am me. The challenge is to play someone who I'm not. So that's where the fun comes in. That's what I love to do. And with that kind of character, even though it's so different from me, to understand the nuances of that character, to understand that to get the वो of that character, उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है. मैं I like I said to you, I don't like to एक तो keep doing the same kind of roles again and again क्योंकि फिर there's no fun in that. And it's not to be honest I don't find it very exciting. So yes, I would like to play very diverse kind of roles. Like I like to, but unfortunately हमारी industry में एक ये issue है कि एक certain age के बाद आपको हर एक को आपके अंदर एक माँ ही दिखती है. तो
और मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे अंदर कुछ और भी देख ले. मतलब मैं एक लॉयर भी हो सकती हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट भी हो सकती हूँ, क्योंकि हर उम्र के लोग जो होते हैं वो जर्नलिस्ट भी होते हैं. माएँ भी जर्नलिस्ट होती हैं, लॉयर्स होती हैं. तो मैं एक स्पाई भी हो सकती हूँ. Oh God, I'm dying to be a spy, by the way. Oh my God. Somebody cast me as a spy, full blown. I would kill it. Yeah, I'm sure you would. So I feel that just because we are in a certain age group, we should not be restricted to just ma, evil bhabhi, evil saas. Bhabhi saas. I think there's more to life than just that. But having said that, जब यही हो रहा है तो फिर यही करते हैं और क्या करें. It's not the choice is not mine. It's the audience's being offered to me. तो उसी में से I select and I see कि अच्छा इसमें से कौन सी ज़्यादा spicy माँ है या इसमें से spicy माँ. That's another interesting role to add to what's your must want to do role in your life. Yeah. But Uzma, that's an interesting point, because I talk a lot about how this the audience is deciding what people want to see. Yeah. Like for example, आप कह रहे हो ना कि यार मैं spy, I want to be a spy, I want to be a spicy mom. जूडी डेंच को देख ले. जूडी डेंच 107 साल की तो होंगी माशाल्लाह. I don't think she's under that, but can somebody tell us in the comments how old she is? अल्लाह उनको बहुत लंबी जिंदगी दे. I am a huge fan of hers. बट जूडी डेंच अब बॉन्ड की मूवीज में जेम्स बॉन्ड की फुपी तो नहीं बनी होती ना, वो स्पाई बनी हुई है. She's like her boss or something. Yeah. And she's a spy and she plays a very cool spy. Yeah. So why who are we to say कि एक औरत है और एक certain age के ऊपर है तो बस इसका दुनिया में एक ही काम है ये बस बच्चों को ही पूछी करती रहेगी. I don't think that's nice. I think we need to change that. Yeah, but don't you think with the advent of like online and web kind of shows, that is changing? Yeah, so I'm looking forward to that. I hope I get like a nice Netflix. Do you feel like it's the audiences are getting more mature as the time is growing? The audiences definitely are. But there's a whole sector of society in Pakistan that appreciates family drama. हमारे family drama का भी एक और ही चाम है. आजकल यूं ही देख रहे हो आप. Yeah, absolutely. यूं ही कितना मजे का है. Yeah. मुझे उसको देख के मजा आता है. I was telling Sham, हम लोग अभी शूट कर रहे थे ना, we were shooting अभी आई हूँ, I've just come back from the shoot. तो मैं उनको कहती हूँ बड़ा मजे का, हमारा बड़ा क्यूट ड्रामा है. तो कहते हैं आराम से चाय पी के देखने वाला ड्रामा है, उसमें कोई है नहीं है. I know. Even the big conflicts are like wonderful to see. Yeah. It's like this. It's not That's lovely, and your role especially is also that's a very spicy mark. It's a spicy cat. Puppy. It's a spicy puppy. I think that's why I was given that. I like that role. कभी इधर कभी उधर. मतलब उनको she's बेचारी वो एक वो पाकिस्तानी टिपिकल वो पाकिस्तानी एक खातून हैं जिनको अपने मियाँ की भी इज्जत रखनी है और बाप की भी इज्जत रखनी है और भाई की भी इज्जत रखनी है. तो वो इज्जतों में बेचारी. The game of izzats. The game of izzats. Yes, she's playing that. That is what I'm playing, the game of izzats. Yes. But Uzma, tell us that do you now see a variety of roles coming your way? Or do you still get the same old spicy puppo, spicy ma, that kind of thing? Okay, so she's about to spill some tea. I wish I had tea to spill. Okay, that's just sad. But no, it's always ma. And बीच में मुझे I started getting a whole bunch of नानी दादी के roles. I said, oh, was it after चुपके I was bombarded with नानियों दादियों के roles. I said, hello, ये तो मैंने अभी मजाक में कर लिया यार. It was a comedy, तो मैंने कर लिया. तो खैर अगले साल फिर हम तुम में भी the whole story कि वो मैंने माँ का करना था. I was very excited कि मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि भाई माँ के रोल में भी कॉमेडी की जा सकती है. कॉमेडी इज कॉमेडी. बट वो फिर उन्होंने कहा नहीं जी प्लीज नानी कर ले. तो मैंने आई एंडेड अप डूइंग द नानी. इतने टेनेसिटी के साथ उन्होंने कहा था. तो मैंने कहा चलो आप इतना कह रहे हैं तो कर लेते हैं. कुछ सोच के ही कह रहे होंगे. वो कर दिया. उसके बाद फिर दादी. फिर उसके बाद मुझे एक दो कॉमेडीज में आए. अच्छा तो वो सो आई थॉट कि तो मैं टाइप कास्ट हो रही हूँ ना.
although I mean एक मुझे एक और आया था, you know, बड़े interesting मजे के जैसे कि मुझे इन्होंने एक वो नहीं थी, कौन थी, नानी थी कि क्या था उसमें, one of the Ramzan serials, वो तो she said how about a hunchback nanny with dementia, and I thought, you know, that's a that's like good, fun, interesting, that'd be fun and interesting, but I said नहीं यार, sorry, you know, I'm going to get typecast, तो वो उस चक्कर में I didn't do it, but having said that, was it in Fairy Tale? Yeah. So having said, but she did a phenomenal job. She was very good. Yeah. और वो तो Hina तो you know, she's so young. Yeah, she's quite young. Hina must be in her 30s. तो मैंने कहा, oh, but she's done a phenomenal job. She has. Bless you, Hina. That was fabulous. Yeah. So you know, I know like age has nothing to do with acting. So Nani Dadi I don't mind doing if it's a very dhasu role, like in a like जैसे चुपके चुपके में it was all about the dadis. The dadis were the two main characters. So it was great. And you know, even in हम तुम, हालांकि तमन्ना खाला का रोल इतना कोई वो relevant नहीं था, but she was it had a layer. It added a very nice context to the whole story. You know, how old people are, you know, lonely, and they also need a job, right? Yeah. They need to do something. They need to feel relevant. So उस तरह से it spoke to me. But then in Hum Tum, I'm sorry to interrupt you, but I think in Hum Tum, your role was so good because a lot of times that script went very serious, and then when you entered, it was like, oh wow, this is fun. I forgot that it was supposed to be fun. So actually when I was reading the script also, ना जब उन्होंने मुझे माँ का रोल पिच किया था, तो मुझे तमन्ना खाला का ज़्यादा मज़े का लग रहा था, you know, I thought, oh, this would be nice, but I said, नहीं, I'm not going down that road. मैंने ज़रा सी भी की ना, तो उन्होंने मुझे यही रोल ऑफर कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मैंने वहाँ ही करना है, and मैंने उसमें कॉमेडी करनी है, but वो था, I guess वो एंड में मुझे ही मिलना था, whatever, but it was good fun. I really enjoyed doing that role. So yeah, you know, in comedies I don't mind doing these nani dadis, but you know, I think in a serious drama it would be very depressing for me to do a nani dadi. वो जब सारे बाल सफेद कर रहे होते हैं ना, आपको बूढ़ा कर रहे होते हैं and all that, वो उस वक्त मुझे बड़ा depression होता है. I don't know why. हालांकि it's supposed to be for a comedy, but I feel very depressed. Yeah. I feel like. But then maybe you can challenge it at some point in time. Although you have, I think you've done this variety of age in your life, in a very young life. So, Uzma, what's brought you to this point? Like, tell us about your journey. Has anyone asked you about your journey? Have you talked about it? Tell everybody. There's so many of your fans, like especially on Chupke Chupke. They make such cute montages of you, and you know they're just lovely, and they still love it. My fans are my life. I tell you, they are my favorite. They really perk me up. मैं जरा भी किसी दिन भी मुझे थोड़ा सा मैं down feel कर रही होती हूँ ना, होता है. Yeah. And या थोड़ी सी depressed होती हूँ. I go to my Instagram. I read all the beautiful comments. By the way, मैं हर एक का comment पढ़ती हूँ. Don't ever think कि मैंने आपको comment नहीं पढ़ा. मैं एक का comment पढ़ती हूँ और पढ़ के फिर मैं उसका जवाब देती हूँ. So, and that is how important you all are to me. Oh. And yeah, no. So I remember someone said to me, Uzma ji, you talk to your fans too much, you know, and I was like, no. I don't care. I have to talk to my fans because they are my lifeline. Aww. You guys are. But then what was your journey like? How did you come from, you know, from I think you lived in Australia. Yeah. You worked as a media person there. Yeah. So it's a long story. Are you ready for this? So मेरा ये था कि I will always, I think when you're going to be an actor, you always know. You know when you're a child that this is something that you want to do. Yeah. So when you're in all the school plays and the college plays and you're getting best actor and you're getting awards and stuff like that in acting, then you know that there's something there, boss. So if my daughter showed that kind of rujhan, I would definitely, मैं तो कहूँगी कि भाई इसको तो एक्टिंग स्कूल में डालते. मैं तो अपनी बेटी को किया ना, वो तो उसको मैंने एक्टिंग की कोचिंग, आई थॉट उसमें मेरे जीन्स हैं तो मैंने उसकी एक्टिंग की कोचिंग बचपन से करानी शुरू कर दिया. पुट हर इन एक्टिंग स्कूल, बट और उसको शी वुड गेट दीज, यू नो, मेजर पार्ट्स इन प्लेज एंड ऑल दैट. वो उसने लीड्स भी किए हैं, नेगेटिव. शी फॉलोइंग थ्रू दैट? नो. व्हाई नॉट? बिल्कुल नहीं. वो जब जैसी टीनेजर बनी, वो बचपन में इतनी को नौटंकी बच्ची होती थी. अब वो जैसे since she's become a teenager, she's become so shy. वो इतनी shy और introverted हो गई है कि वो एक्टिंग करना तो दूर की बात है, वो किसी से खास ज्यादा बात भी नहीं, वो बहुत shy है. So वो मेरे से diametrically मुझे लगा ये
उज़मा पार्ट 2 पैदा हो गई घर में, शुरू में बचपन में जैसे वो उंगलियां उठा उठा के सबको सुनाती होती थी। मैंने कहा ये तो मैं आ गई हूँ दोबारा। ये मैंने अपने घर में सेकंड जन्म है, दूसरा जन्म ले लिया। अपने घर but then she's different now, but you were always this personality was consistent. And my husband is very introverted, तो वो I think बाप पे चली गई है। मुझे पता था कि उन्होंने आके मेरी लाइफ में कोई ना कोई गन जरूर करना है। No, but then is it because you were extroverted that you decided to pursue acting, or was it something about acting that you really enjoyed? Okay, so like I have always been a big nautanki. You know what I mean? Big drama queen. मुझे याद है मेरे मियाँ किसी से मिल रहे थे, तो he said I'm sorry, my wife is a big drama queen. तो वो पाकिस्तानी थे, तो वो समझे कि मेरी एक्टिंग की बात हो रही है, तो कहते हैं yes, she's a very big drama queen in Pakistan. Sweet God. So they all took it literally. Very good. Very good. कि मेरे पास एक मग भी है that says drama queen. But अभी भी जैसे मैं लेट हो रही थी तो मैं कर रही थी। Yeah, it was a full-on show. Trying to attract my husband's attention कि वो मेरी को मदद कर दें। मैं भी हूँ, कुत्ता भी है, आपको घर से निकालना है, जरा कुछ। Yeah, her dog is here too. We'll show you guys the dog. It's a very cute dog. So he's my son. Oh, he's sorry. खबरदार जिसको मेरा डॉग कहा। नहीं, it's not the dog. मेरा बेटा है। Okay, great. The beta is here. Hello, beta. मेरी आंखों का तारा, मेरे बुढ़ापे का सहारा। Oh my God. You see what we mean by drama queen? This is what we meant. Ta-da! Yeah, but my favorite thing is comedy. So my journey was really. So I always knew that this is what I want to do, but my mom didn't want me to get into this. Conservative family है, तो वो बचपन से उन्होंने कभी. None of your family members ever went through or tried or. Nobody encouraged me. So you were the अनोखा तारा. So मैंने उनके बावजूद कर दिया है किसी तरह। वो तो अल्लाह मेरे मियाँ को बहुत लंबी जिंदगी दे, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, एंड जो भी मेरी फैमिली ने नहीं किया बचपन में वो उन्होंने कर दिया, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट वंस आई वाज मैरिड एंड आई स्टार्टेड एक्टिंग एंड ऑल, उसके बाद माय फैमिली बिकेम क्वाइट सपोर्टिव। तो लेकिन मन खाता था कि खाता बाद में ये ऐसे पहले होते तो बात होती ना, अब क्या ये क्या बात है। नहीं, but अब they're very supportive, so they're probably proud of me. God bless them. No, I'm sure they're proud of you. And then you went all the way to Australia. Then you so I went there. I was in London. London में अरे भाई मैं लंदन में एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसका नाम आयशा है। तो मैं उसको मिली, I met her at a party and she looked at me and she said you have a very newsy face, and I said newsy face, what the hell is a newsy face? So she said would you like to present the news? तो मैंने कहा मैं as a student, you know how it is, वहाँ एज ए स्टूडेंट आपको काम करने की इजाजत होती है। तो मैं एज ए स्टूडेंट गई हुई होती है, तो यू कैन डू सर्टेन आवर्स ऑफ पार्ट टाइम वर्क एज ए स्टूडेंट व्हेन स्टूडेंट वीजा पे आप जब जाते हैं। तो मैं तो एज ए स्टूडेंट वहाँ पे थी, तो शी सेड वुड यू लाइक टू प्रेजेंट द न्यूज़ ऑन टीवी? तो मैंने कहा हैं मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाने वाली थी, वहाँ पे मेरा एक्सेप्ट हो गया था, मैंने पैसे दे दिए थे, और मुझे उन्होंने एक वो भी दी थी, what do you call it, they'd given me a little scholarship also. Oh my God. So yeah, so they'd given me what is it called, a little scholarship. Yeah. So because foreign students के लिए it's super duper expensive, so it was only 3,000 pounds का डिस्काउंट उन्होंने दिया था मुझे, but it was big. Quite sizable. हाँ, क्योंकि लाखों जो आप यहाँ से लेके जाते हैं वो करके इतने से रह जाते हैं, और अब तो और इतने से रह जाते हैं अब तो। और मैं तो खैर बहुत ही बेवकूफ औरत थी, I was so बेवकूफ कि you can't. Full points for honesty guys. मेरा कजन जो है ना मुझे कहता है मैं ना बैंक अकाउंट खुलवाने जा रही थी लंदन में, because I was going to be a student there. So he said so where's the money? तो मैंने कहा in my bag. हम लोग वॉक करके जा रहे थे बैंक की, तो he said no where is the money, जो तुम्हारे सारे तुम्हारा जो सारा पूरा मास्टर्स डिग्री जिससे फाइनेंस होगी और तुम्हारे रहने वहने के सारे जो पैसे हैं जो लाखों हैं वो कहाँ हैं? तो मैंने कहा मेरे बैग में। सारे पैसे इस वक्त तुम्हारे बैग में? मैंने कहा हाँ। कहते अच्छा ट्रैवलर्स चेक्स होंगे? मैंने कहा नहीं, कैश। वेरी गुड। कहते हैं सारा कैश तुम्हारे बैग में? मैंने कहा हाँ। तो he said सुबह बना ही से भागो, सुबह started running, हमें इस वक्त कोई लूट के ले गया तो क्या होगा? तो मैंने कहा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। और उसके बाद फिर जब बैंक में जमा करा दी तो उन्होंने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया और डेबिट कार्ड दिया, ठीक है। अच्छा एटीएम कार्ड था पैसे निकलवाने के लिए, तो मैं क्या करती थी, मैं अपने क्रेडिट कार्ड को डेबिट जब भी घर से जाती थी उनको घर पे छोड़ के जाती थी कि ये कहीं गुम ही ना हो जाए। और
कैश साथ लेके जाती थी. It was so I was that silly, seriously. Naive and silly and sweet. Very naive and silly and sweet और जो भी था. Sweet ही होता है यार उस उम्र में बच्चा क्या होता है. You're just a young person and you're starting out. I know. So and उसमें ये था कि it was quite challenging. जो एक इंसान बच्चा अपने घर में पला हो, आपको पता है हमारे बच्चे तो शेल्टर्ड होते हैं ना बच्चे काफी, हाँ. बड़े नहीं होते, उनको कुछ पता ही नहीं होता, हाँ. कभी उन्होंने बिल नहीं देखा होता, उनको we don't know all these things. So मैं तो I was very silly. तो मैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड घर में छोड़ के जाती थी कि ये कहीं चोरी ना हो जाए, कैश लेके घूम रही होती थी. अजीब अजीब हरकतें मैंने की हुई हैं. तो but you did the news then. Yes, I did the news. And how was that experience? It was very good. It was but I stopped doing it because the news I realized is very bad news. मैंने कहा ये तो the news is supposed to be bad. News cannot be good. जब न्यूज़ पढ़ने आओ तो फलाना इधर मर गया, तो फलाना उधर मर गया, तो 6 लोग उधर मर गए, 5 लोग उधर मर गए. मैंने कहा ये क्या बकवास. And I was getting depressed. I said ये क्या, this is bad news. I don't want to do this. But then where did you get like the bug, like okay I can act? Entertainment side नहीं, acting का bug तो बचपन से था ना. तो मैं तो I met this girl. I told you I met this girl at a party and she said तुम उसी के साथ ना न्यूज़ भी शुरू की. But I was still about I was still going to LSE. So I was on my way to LSE, but she said to me कि don't do that. Don't what do you LSE जाके क्या कर लोगी? You are a media person. तो तुम तो you should do something in media. मैंने कहा dude, I only get to do this once, because this is very expensive and I'm trying to do it myself. So she said कि no, but you do it a master's in film direction. So this is what she took. It was the best advice ever. Yeah. क्योंकि वो करके भी मैंने कौन सी मक्खियाँ मार लेनी थी गोल्ड की मुझे नहीं पता. But I think I needed to be here. Yeah. This is my life. Yeah. And this is advice that I give to everybody कि you wanna do झाड़ू पोछा for the rest of your life. If you're passionate about it, do it. Is anybody passionate about झाड़ू पोछा? People must be. There are people who have a cleaning की booth. So they become professional cleaners and they're fantastic. Yeah. You want to do that, but do whatever you're fantastic at. Otherwise, आजकल के in this day and age of competition, such strong competition, you'll scratch your way to the middle if you're not passionate about what That's you're doing. such good advice, because what's happening is it's like I think it's a Charles Bukowski quote that find what you love and let it kill you. Yeah. Because unless you don't do that, you will be mediocre at everything. अब मुझे देखिए, it's a labor of love. मुझे oh my god, मुझे अपनी फैमिली को छोड़ के अपने बेटे को छोड़ के भी, मेरा बेटा टाई लगा के आया हुआ है यहाँ पे. So अब अपने अपनी बेटी को छोड़ के, मियाँ को छोड़ के मैं हर महीने कराची में बैठी होती हूँ, शूटिंग कर रही होती हूँ. So it is painful, but you can endure pain for something you love to do. Yeah. और मुझे याद है हम लोग ना आंगन के सेट पे ना इंतजार घंटों वेट. तो I went up to Sham one day and I said, he was the director, and I said कि मैंने कहा मैं तो I think मैं आज officially मर जाऊंगी. तो क्योंकि वहाँ सर्दी भी बड़ी होती थी और facilities भी इतनी नहीं थी. तो he said acting is your passion, you are paid for waiting. This is what you are paid for. Wait. That's such good advice. It was such great advice. उसके बाद waiting never hurt me anymore. I realized the acting part is the fantastic part. Is the part that we love, but the waiting and the hours and the sweat and the blood and the tears. It's awful. So London में I did. So she convinced me to do a master's in film direction. तो फिर मैंने LSE को टाटा कह दिया और मेरे पैसे भी चले गए. LSE को टाटा करके फिर मैंने जल्दी से film schools पे apply किया, and I was so passionate about this कि I got it. Wow. And it was such a good decision. Money very well spent. Or my first job was with after I graduated, my first job was with ARY. I used to be an anchor with them and a program director. मैं वहाँ काम करती थी लंदन में भी, फिर मैं दुबई भी चली गई उनके साथ. वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई. पर ये कि उस वक्त एक्टिंग मैं इसलिए नहीं करती, मैंने साइड पे किया था एक अधूरे के नाम से एक ड्रामा किया था फैसल रहमान के साथ. और एक there's an Indian actor called Ashwin Mushran. वो आजकल राणा नायडू एक नेटफ्लिक्स की सीरीज चल रही है, उसमें he is playing Farzad. And so he was opposite me in that drama. लंदन में बना था वो. That was my very first drama, proper drama serial. And it was way back in 2002.
Okay, wow. 2002, yeah, It's that 20 was years my ago. first one. फिर उसके बाद बस फिर I had to move when ARY moved their headquarters to Dubai. I came to Dubai, but बीच में मेरी शादी हो चुकी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड को जॉब ऑफर ऑस्ट्रेलिया में मिल गई थी, तो वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, मैं दुबई रह गई. तो मैंने सोचा था कि जब तक मेरी मेरी PR वगैरह नहीं हो जाती तो I'll stay in Dubai, but you miss your husband so much. फिर I just quit my job and went. बस फिर उसके बाद जो अंधेरे थे और मैं थी, क्योंकि यही तो मेरी लाइफ है. मैं अंधेरों में भटक रही थी. नहीं, फिर इट वाज गुड. आई रिलैक्स्ड. इट वाज नाइस. वहाँ पे मेलबर्न आप टिक के तो बैठ नहीं सकती, तो मेलबर्न यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली. वहाँ से डायरेक्टर्स मास्टर क्लास की मैंने. सो आई हैव अ मास्टर्स इन फिल्म डायरेक्शन एंड देन आई आल्सो हैव अ डायरेक्टर्स मास्टर क्लास फ्रॉम द मेलबर्न यूनिवर्सिटी. तो ये सारा कुछ करने के बाद फिर बट माई रियल कॉलिंग वाज एक्टिंग. आई जस्ट एट दैट टाइम आई जस्ट डिडंट नो इफ आई कैन मेक अ फुल टाइम लिविंग आउट ऑफ इट, एंड दैट आई ओनली एंडेड अप डूइंग वंस आई मूव्ड टू दुबई. ऑस्ट्रेलिया में रह के ये नहीं हुआ. ऑस्ट्रेलिया में आई वाज अ रेडियो जॉकी. आई वाज अ full-time radio jockey, and I used to do the breakfast show. But then when were you consistently doing work for Pakistani dramas? Since when? Consistently इसके बाद फिर एक और किया था आके 2012 में किया था, जहाँ they paid for my ticket and everything. बुला के मुझसे 5 roles करवा लिए and all that. That was very nice comedy. वो बीच में किया था, but वो बड़ा off and on type था. मैं full time 2015. February 2015 से. That's lovely. And then now we see you in Yuhi, we've seen you in Pyari Mona as well, and so many other roles. Uzma, what is it that, like you said something in the beginning, that you always try to add something to the role that you're given. Like you don't want to do like a flat out character which is just like beta aa jao chai piyo, that kind of thing. What do you do? What's that process? Where do you get that inspiration? Are there people around you? Because a lot of actors are observers. They're very good observers. Is that where you something well, pick up something? I'll tell you the very first I have a story to tell about this. The very first drama I did ना, मेरा सबसे पहला ड्रामा जो यहाँ हम के लिए किया था, that was इश्क़ बेनाम है, इश्क़ बेनाम. And उसमें that was a very it was a life changing, यानी मेरे लिए एक life changing game changing ड्रामा था, सबसे पहला ही. तो उन्होंने मुझे इन्होंने कॉल की थी और दुबई में they asked me कि would you like to work in Karachi. I said I would love to work in Karachi. मैं इसीलिए दुबई आई हूँ. तो खैर उन्होंने मुझे बताया किस तरह से गरीब बेवा का रोल है, और मैंने कहा बेवा तो मैंने ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी की हुई है, तो मैंने कहा shouldn't be an issue at all. मैंने एक्सेप्ट कर लिया. कहा जी गरीब बेवा का रोल है, ये तो मैंने रियलाइज ही नहीं किया था कि कितनी गरीब औरत है, उसमें 100 रुपया नहीं है कुछ करने के लिए, So that was a bit out of my league. Literally, I was thinking, oh my God, I've bitten off more than I can chew. तो मैंने तो 1.5 days into that, मैंने 1.5 दिन के बाद ही जाके कहा, मैंने पहले AD से कहा, मैंने कहा बॉस मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, I'm so sorry. They said नहीं आप कहीं नहीं जा सकती. तो मैंने फिर डायरेक्टर से बात की, मैंने कहा सर मुझे लगता है कि मेरा ना बहुत सीन ख़राब हो गया है, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही वो ऑप्टिमिस्टिक होकर ये एक्सेप्ट कर लिया रोल. तो मुझे लगा कि मैंने सफ़ेद पोश लोगों का था, मैंने कहा आई हैव नेवर इनकी बॉडी लैंग्वेज में कैसे एम्बाइब करूंगी, ये वो मुझे लगा था कि मैं आई विल नॉट बी कन्विंसिंग. तो उन्होंने कहा नहीं आप कहीं नहीं जा सकती, आप ये बहुत बड़ा, बिकॉज मेजर वो टाइटल था, वो टाइटल रोल था. तो आई वाज लाइक, तो ही सेड नहीं अब बहुत देर हो गया, आई कांट फाइंड समबडी एट दिस पॉइंट, आपको करना ही पड़ेगा, हिम्मत करें, वो जो ब्ला ब्ला ब्ला. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. फिर मैं रोज़ जाके वो जो आंटी थी ना घर की, उनके पास जाके बैठती थी. पहले मुझे होता था कि ये एक औरत को इतने सारे प्रॉब्लम्स कैसे हो सकते हैं, मुझे वो कन्विंसिंग ही नहीं लग रहा था. बट मुझे बाद में आई रियलाइज कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज जो है ना, दे आर एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ रियलिटी बिहाइंड देम. देयर इज एंड ऐसे नहीं उन्होंने मुंह उठा के फिक्शन के जी ओ ये भी है, ऐसे नहीं होता. क्योंकि जब मैं आंटी के साथ बैठती थी रोज़, गॉड ब्लेस हर, बहुत प्यारे लोग थे वो. उनको आंटी को ब्लड कैंसर था, उनके हस्बैंड को एपिलेप्सी थी, उनके कमाने वाली एक ही बेटी थी, एक बेटी की शादी हुई थी, इस तरह से बहुत प्रॉब्लम्स थे. ऊपर अंकल की तो डेथ भी हो गई, वाइल भी वो शूटिंग अंकल बेचारों की डेथ हो गई. सो इट वॉज रियली सैड. तो मैं बैठ के उनसे बातें करती थी और उनके गम को मैं थोड़ा इंटरनलाइज करती थी, और उनके उनकी बॉडी लैंग्वेज को मैंने इम्बाइब करने की कोशिश की थी. एंड आई होप आई वाज सक्सेसफुल. I'm sure you were, and I think that is one of the key
things why we need more artists in the world, हाँ. because they have empathy हाँ. for people who are actually going through difficult things. I want to thank you so much for your time, Uzma, and I wish we could, I wish people would tell us what they got from her experiences, because there's so many great things that you've talked about as an actress and as a person who's been on that journey. Is there any message you'd like to give to people who are watching you and who are your fans? मैं तो यही कहूँगी कि लगे रहें, कीप वॉचिंग माई वर्क, किसी और का देखें ना देखें, भाड़ में जाए पूरी दुनिया, मुझे तो जरूर देखें. No, very humble and very modest, not self-obsessed at all. And to my fans, I would say, oh my God, I love you more. Seriously, bless you all. और जो भी कर रहे हैं पैशन के साथ करें. और I tell you, if there is something you want in your life, the entire universe will conspire to make it happen for you. You can do it. If anybody can do it, you can do it. I swear, अगर मैं 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आ सकती हूँ, और मैं अपना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि there's something missing ऑस्ट्रेलिया में, मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी, क्योंकि वहाँ पे ना, if you're not blonde, blue eyed आप नहीं हैं, आपका ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट नहीं है, तो फिर वो थोड़ा सा, the pool is very small. Pool is small, exactly. तो मुझे तो if I can do it after something that I love so much, और इतना ज़्यादा पूरे ख़ानदान को, God bless my husband, वो पूरा the guy moved continents for me. Wow. So एक तो ऐसा बंदा ढूंढे, और दूसरा अपने पैशंस को फॉलो करें. जैसे मी, I speak, I love languages, I love learning languages. I feel like if I wasn't an actor, I would either be an interior designer or I'd be a translator. I think you told me you speak like 8 languages. Yeah. Wow. I do. Yeah. So I'm but I guess the acting bug was much stronger than the language bug. So which is one of the weird not weird, but like not so common languages that you speak. Well, I speak French and Spanish, but they are very common also. Yeah. English, French, Spanish, Italian. And Italian, I understand it better than I speak. But French and Spanish, yes, are very well. So French, would like to hear you say something in French. Oui, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je peux dire ce que tu veux. I have no idea what she said. What did you say? I said, yes, what would you like me to say? I can say whatever you like. Amazing. It's a woman of multiple talents. Please watch her work. I think she was phenomenal in Angan. She's phenomenal in Yuhi. She's such a breath of fresh air so many times in the shows that she's in. But I think comedy is my forte. It is. I think that's you're very strong at it. If I never get a serious drama again, I won't care. I will. Really? But comedy is something I love. Okay, so then we need to write better roles in comedy for women, guys. Come on, let's do this. But actually मैंने गलत statement दे दी. Serious dramas भी बड़े ज़रूरी होते हैं. ज़रूरी होते हैं. Yeah. फिर वरना तो बंदा comedy करके तंग आ जाएगा. And knowing me, तो मैं तो आ ही जाऊँगा. But you love acting. That's the bottom line. Oh yeah, that's the bottom line. Yeah. So the bottom line is we love acting. Cast her as a spy, a comedic spy. Mr. Bean as a spy. Yeah. She knows no fear. She knows Johnny no English. danger. She knows nothing. But she's gonna. Uzma 007. Uzma 007. Cast करें यार, मैं लिख लेती हूँ ये वाला. किसने लिखना है? Let's do it. Thank you so much once again, Uzma. God bless you. Thank you for taking out your time, and thank you to the son. बेटा इधर आ जाओ. मेरा बेटा. Come. Tricky. Come here, puppy. Come here, puppy. Surprised. Come here, मेरा बच्चा. Come. He's a special appearance. लो अभी वो ले रहा है. अंगड़ाइयाँ ले रहा है. अंगड़ाइयाँ ले रहा है. Okay. We have a doggy. Such a cutie. ये मेरा बेटा है. ये मेरी आंखों का तारा. He's adorable. ये मेरी आंखों का तारा है. What do you say? French dog. Chien. Okay. And in Spanish it's perro. Okay. There you go. Perito. Thank you so much, Perito. Thank you so much. Uzma, how do you say Uzma in Spanish? Uzma is Uzma in Spanish, right? Uzma. Thank you, Uzma Beg, guys, ladies and gentlemen. Big round of applause wherever you are. Let us know in the comments that what would you like her to see in a role next. Take care of yourself. Have a good day. Follow your passions, as Uzma said, and be empathetic and kind. Thank you, Mahwash. Bye. Thank you. Bye.